Arushi and welcome back to my channel. And as you know by the title of the video that today we are going to do a food color challenge and it's going to be blue. So आज blue है पानी पानी types. आज का food challenge would be a blue color food challenge and the main ingredient for today is this blue mocha powder. So basically this is the blue matcha and there are these flowers, these butterfly pea flowers, and those are edible. So basically those are crushed and this powder is extracted from that. So this is the main ingredient for today. And as we know that lockdown चल रहा है, corona है and everything that's going on, so कुछ भी बाहर का नहीं होगा, everything would be prepared at home. So मैं 11 बजे उठी थी and like it's 12 right now, like we're getting on ready and stuff. So उसमें 12 बज गए हैं and dude my sleeping schedule is effed, like totally effed. Like I sleep at 5 in the morning, I get up at 2 in the afternoon, so it's bullshit. But because मुझे ये full day challenge shoot करना था, so I had to get up a little early, although 2 hours early but early. So like it's 12 right now and मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया है because मैं उठी 1 घंटा पहले, तो मैं क्या खाऊंगी पीऊँगी. So let's get on with our breakfast first. And breakfast के लिए we'll be having some oats and some blueberries. So let's go. Okay, so ये तो oats रहे and ये बस almost हो गए. And ये blue powder है, although color black है but still देखते हैं थोड़ा सा डाल के. मुझे तो लग रहा है ब्लैक कलर आएगा. ओह ब्लू, वाओ. कितना अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा था ब्लैक आएगा बट ब्लू आया है. ओके गाइस, सो ओट्स तो मैंने बना लिए हैं एंड क्वांटिटी कम है बट ओ माय गॉड, यू सी द कलर, इट्स सो ब्यूटिफुली ब्लू. लाइक वाओ, लाइक आई डिड नॉट इमेजिन कि ये ब्लू आ जाएगा बट वाओ. एंड इवन द पाउडर का कलर भी ब्लैक था, सो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगा था कि ब्लू आएगा. एंड ये मैंने बहुत बार बोल दिया है बट चलो. हियर इज द ओट्स एंड अगेन आई ऑर्डर्ड दीज ड्राइड ब्लूबेरीज, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, जस्ट मिल्क एंड ओट्स राइट नाउ. सो लेट्स ऐड सम ब्लूबेरीज. अब आई नो आपको लग रहा होगा कि ब्लैक है बट दीज आर ब्लूबेरी गाइस, तो आई कैन हैव इट. एक गिर गई थी. So let's try with the blueberry. Okay, it's amazing, 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 amazing. The blueberry, the oats in itself, and the blue matcha powder, and the combination is nice. You will be thinking कि मैं खड़े होकर क्यों खा रही हूँ, because मेरे डाइनिंग रूम में इतनी लाइट आती नहीं है एंड आई वांट कि यू नो द वीडियो शुड बी अ बिट लाइटी, मतलब अच्छे से उस पर सनलाइट आनी चाहिए. एंड सिंस आई हैव दिस बिग विंडो, तो वी शुड मेक द यूज ऑफ इट. Oh my god, so good. Hello. I'll finish it because you know I have very slow speed in eating. So I'll have it. And then उसके बाद we'll get into the lunch. Lunch में क्या बनेगा? Let me tell you. We are making something very interesting. And yeah, one more thing let me tell you. जब भी हम यहाँ पे है ये तो that for in between snacks, अब blue color का आपको कुछ munching के लिए तो नहीं मिलेगा. So we have the blueberry Greek yogurt and it's also blue, I guess. Like fish. It's purple. Oh, how come? It's purple. So मैं नहीं खा पाऊंगी.
नहीं है, वी कांट ईट इट। लाइक आई वाज सो एक्साइटेड, मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए ऑर्डर करे थे। चलो नो वरीज, विल प्रिपेयर समथिंग, विल लुक फॉर समथिंग बिकॉज वी हैव द पाउडर एंड हम किसी में भी ऐड करके वी कैन मेक एनीथिंग, सो विल ट्राई दैट। अभी तो आई हैव माई ओट्स एंड देन उसके बाद लेट्स सी। हे गाइस, सो आई एम बैक। सो अभी टाइम हो रहा है 4 एंड वी हैड आवर ब्रेकफास्ट दैट वाज ओट्स एट अराउंड 12:30। सो नाउ जो हमारा लंच है उसको मुझे प्रिपेयर करने में लगे हैं अराउंड 1.5 लाइक 2 hours। सो बहुत टाइम लगा है, बट व्हेन आई शो यू द डिश इट वाज लाइक टोटली वर्थ इट। जस्ट अ सेकंड। So we have our lunch. So I have prepared mousse, and can you see the color? Like wow, wow, wow. So oh my god, just the color of this is like आपको Avatar की याद आ जाएगी। Is the best singer. And it's such gorgeous blue. It's such gorgeous blue, like oh my god. And can you see मैंने ना बहुत सारी shapes try करी है, like this is the normal shape, then we have this kind of a rose shape मैंने बनाई है guys, and ये जो normal मोमोज की shape होती है वो है, although बिल्कुल flat है but it is what it is। but oh my god, like ये जो froze वाले हैं इनकी shape भी बहुत अच्छी आई है, and just the color, I'm drooling over these। तो बहुत बातें हो गई एंड यस, ड्रिंक टाइम। सुबह हमने कुछ पिया नहीं था, बट लेट्स ड्रिंक समथिंग दिस टाइम विद दिस। सो फॉर ड्रिंक वी हैव Gatorade in the blue bold flavor। So let's open our drink। Such pretty color, oh my god, I'm so happy that I chose to do this blue color challenge, blue, because like it's just give you a very aesthetic feeling even to have these। अब इसके साथ of course मैं चटनी नहीं ले सकती, the red chutney, but here's the plate। Sorry guys, मैं ना बीच बीच में thumbnail बहुत बनाती हूँ because I love creating amazing thumbnails for my YouTube। So let me taste it and tell you। ये basically पनीर मोमोज है, so इसकी stuffing में we have पनीर, onions, garlic। So here we go। Delicious to another level। Like it took 2 hours, but totally worth it। हाँ, मज़ा आ गया। And since you live in Delhi, and momos, तो like I love, like there's no Delhiite who doesn't love momos, and if you are one of them, then no harm feeling against you, but conversation time। I just saw Friends का reunion, like not just like when it was aired, it was so amazing, like I was literally crying, and it was just so emotional seeing the six of them together। And after watching the reunion I have restarted watching Friends because like I was like confused कि मैं कौन सी series देखूं, and like I couldn't find anything, so like going back to the OG is something which can never upset you or can never be bad or can never be a bad decision। So yeah, I'm again watching Friends, I'm on the second season right now, so I'll have this delicious meal of mine with Friends, and it's 4 right now, so yeah, I'll meet you for dinner at around 8:30, and that again is going to be something very fun, very tasty,
वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो डोंट थिंक कि 4 घंटे में फ्री होने वाली हूँ. 4 में से आई एम श्योर मेरे 2 या 3 घंटे मेरे डिनर को बनाने में लगेंगे. सो adios, going to watch Friends. So it's around 9 p.m. so dinner time, and dinner में we'll be having something Italian. So dinner में we'll be having pizza, yeah, blue pizza. So उसकी प्रिपरेशंस मैंने काफ़ी कर ली है, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी. बस इधर ही रख लें. जैसे ये पिज़्ज़ा है तो ये बेस तो मतलब हल्का सा ग्रीन कलर हो गया, बट देखते हैं. सो ये चीज़ है, इसमें हम ब्लू कलर डालेंगे इन द होप्स कि ये ब्लू हो जाए. एंड अगर अभी ना हो तो मेल्ट होके मे भी. दिखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग पा रहा. मुझे लग रहा है मे भी मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा हो जाए. बट द एंड प्रोडक्ट से पहले वाला प्रोडक्ट इज़ दिस. सो आई नो इसमें आपको बेस अभी ग्रीन लग रहा होगा. एंड जो चीज़ है मैंने उसमें बटरफ्लाई पी पाउडर डाला है, ब्लू वाला पाउडर. सो उससे ऐसा लग रहा है. अवन अभी प्री हीट हो रहा है. सो माई ओनली होप इज़ ये मेल्ट होके द चीज़ वुड बी ऑल ब्लू ऑन द टॉप एंड वील हैव अ ब्लू पिज़्ज़ा. बेस में भी ब्लू डाला है एंड वी आर मेकिंग द होल व्हीट का नहीं, बट लाइक व्हीट का हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, समथिंग लिटिल हेल्दी. तो लेट्स सी. सो ये हमारा पिज़्ज़ा ओवन में जाता हुआ. ओ लाइट ऑन हो गई. चल कितनी देर लगता है हमें से? 10 minutes. Okay. So our pizza is ready, but it's more black rather than blue, I should say. मतलब if you look closely, and I don't know if you can see a bit of blue here, like on the cheese and the back as well. So it's also blue, and ये भी हल्की हल्की blue है. And the cheese on the top, मतलब अगर आप इस क्रैकर को बेसिकली हटाओगे which has turned brown, तो you could see the blue cheese underneath rather, like maybe a bit more light and you will be able to see it. So yeah, but this is totally blue if you can see. Yep. So taste करके बताती हूँ. Oh my god, it's not good at all. Like I don't know what I'm eating basically. Here's the blue cheese. And it's like out of 10, if I have to rate it, maybe a 3, just because the cheese tastes fine and that's it. So our breakfast was good, our lunch was amazing, the momos we had, and our dinner is मतलब ठीक है, like a blue food challenge है, so have to eat blue anyhow. It's good that I had momos and I have a few left, like 2-3 pieces. तो मैं दोबारा वही खा लूँगी because this is like इस तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया एक्सपेरिमेंट. बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाया एक्सपेरिमेंट. Like, can you see the blue or are you seeing the black? I don't know, but it's blue, you guys. It's blue. Okay, that's it. I'm not eating this. I can't eat this. I'll have the leftover momos from the afternoon and see you after my dinner. Okay guys, so I'm back to my room, and after that unappetizing pizza and those very appetizing momos, it's time for dessert. And for dessert we have this black grape ice cream, and I really wish then when I open it, it has a hint of blue in it,
because you know why did I cook momos today? It's because I did not want, God do not want me to eat anything today. Why is all this stuff purple today? Like we had the yogurt like for my evening snack which I bought, and it was also purple, and this is also purple. I can't have it. It's such a nice purple color here. I was like, I'll eat it, my tongue will go all blue, but nothing of the sorts. Well, another disappointment. Can't have the ice cream. कोई बात नहीं. Yeah, I was telling you why did I take the decision of cooking momos, because if you fry something or if you cook something on the gas, so it tends to turn black or something. तो वो काला हो जाता है या फिर वो पता नहीं तो कौन सा कलर बन जाता है, but it doesn't stay blue. Like it doesn't stay blue. So इसलिए I thought why not steam, मतलब कुछ steam का खाना बनाती है, and that's why I chose momos, which was a heavenly decision. But oh my god, I wanna eat it so bad. I'll eat it at yeah, my day started at 12. Chalo, no worries. We'll have it some other time. So this was it. So this was it for the video. So this was it for the video. Do tell me in the comments if you liked all the blue foo. So this was it for the video, and it was all the blue food that I cooked for today. Do tell me which was your favorite, although I have an idea which it was, and stay tuned for more fun videos. Bye bye.